they asked me by my surname that आपका surname बहुत ही अलग है, Oberoi, because usually you don't find people inside with such kind of surname. So he asked me a question about Vivek Oberoi and Suresh Oberoi, his father. It's descriptive that much. And when you're giving the descriptive examination, there is so much noise inside the room. Somebody is shouting, मेरा PC बंद हो गया, my mouse is not working, my keyboard is not working. There is time foundation, time flies. Everybody has told there is a perception that इंटरव्यू जितना पहले हो जाए उतना अच्छा है, यार आज आएगा रिजल्ट, लगता है आज आएगा, गट फीलिंग है. And that time I was doing KYC and all of a sudden the notification came that SBI PO final result has been out. I straight away left all the work. I straight away went to washroom to check it, and I remember my roll number and I just typed it. And in the middle row, बड़ी एक अच्छी कहावत है कि कहते हैं कि दुख की रात में सोता कौन है और खुशी की रात में नींद किसको आती है. And then I remembered that how I used to give mocks. ट्रेन में बैठे बैठे मॉक्स लगा रही हूँ, बस में चलते चलते मॉक्स लगा रही हूँ, बैंक में लंच टाइम है उस समय मॉक्स लगा रही हूँ, जीके के मॉक ड्रिल्स दे रही हूँ स्मार्ट कीड़ा पे. Hello everyone, welcome to this amazing podcast where we are with today Guneet Oberoi. Guneet has cleared SBI PO this year, so a lot of congratulations from my side, for my whole team, for the whole SmartKeeda team to her. And without further ado, I would ask Guneet to introduce herself so that we know more about her. And over the course of the chat, you would also know that how she prepared, and that would help you. आपको बहुत help भी करेगा कि in your own preparations. Okay, right? So Guneet, कुछ अपने बारे में बताइए. First of all, thank you so much, sir, for congratulating me and for your beautiful wishes. So my name is Guneet Oberoi. I am from Alwar, Rajasthan. It's a very small town in Rajasthan. Everybody must have heard about. It's covered by Aravlis. And I started my banking preparation this year only. Earlier, I was preparing for regulatory bodies. I started preparation this year, and SBI PO 2024 was my first attempt of SBI PO examination. That was my first attempt of banking examination. Okay. I couldn't clear mains that time. It was missed by 2 marks. I was devastated, but then I came back, bounced back. I gave SBI Junior Associate. I got selected, and I got my posting in September. Then came the notification of SBI PO 2025. Yeah, it I just was on came the one top of after the the other, sky. right? Exactly. And it was unexpected totally that how they could conduct the examination at such a small Twice span of and time. twice a year. Exactly. कभी कभी तो Exactly. That करते has ही, never कभी कभी तो happened होते before. ही नहीं है, तो ट्वाइस अ ईयर. हाँ. हाँ. उसके तो बाद जब वैकेंसी देखी तो और ज्यादा टेंशन हुई. 541 इज नथिंग एंड देन यूआर कैटेगरी ओनली 203. बट देन आई सेड कि ठीक है यार, वैकेंसी कोई बात नहीं, बिकॉज रेगुलेटरी में भी नहीं आती थी. तो आई थॉट कोई बात नहीं, आई जस्ट नीड वन सीट. दैट वाज माय माइंडसेट फ्रॉम स्टार्टिंग टू बिगनिंग. वेरी गुड. I gave the prelims, and I attempted this time 86 in prelims. I worked on my speed. I was very good. I was doing fine, and I was very happy with my performance. But then my joining came in between, and there was a full stop on my preparation because I was so busy in entire preparation journey of joining as a junior associate. I literally remember the day, 12th of September was the day I was first ordered to go to RBO. I went there, and 13th of September was the mains examination. I came home at 10 o'clock in the night, and I had a train of 3 o'clock in the morning for mains examination. I went there. I gave the mains examination. The first thing I came outside and said to me was, finally it is over, because I was feeling कि यार क्या हो रहा है ये, मैं इधर से उधर भागी जा रही हूँ. Then came the main result. I was shocked that this has happened, because I honestly don't remember what I had done in the examination. I just had that my English is good, I had command on reasoning, and my descriptive was good. I had practiced descriptive thoroughly because I knew that 50 marks matters a lot. That is a You lot. can, if you are attempting it, you are attempting the entire descriptive exam, you are way ahead in the league. Because many people don't practice descriptive that much. And when you're giving the descriptive examination, there is so much noise inside the room.
somebody shouting, मेरा पीसी बंद हो गया, my mouse is not working, my keyboard is not working, there is time foundation, time flies, मतलब ऑब्जेक्टिव में मतलब टाइम जितना पता ही नहीं चलता है जल्दी कब जाता है, निकल गया 30 मिनट। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली सर। मेरा ये था कि कोई बात नहीं, कैसा ही हो मैं पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आऊंगी, डिस्क्रिप्टिव मुझे नहीं छोड़ना है, एंड आई न्यू दैट दैट हैज हेल्प मी। आई प्रैक्टिस एंड आई अटेम्प्टेड इट। मेरे पास, आई स्टिल रिमेम्बर, 2 minutes वर लेफ्ट एंड आई वाज कंप्लीटेड विद डिस्क्रिप्टिव, आई वाज टाइपिंग इट सो फास्ट। then came the mains result, I was so happy. Then started the interview because this was my first interview of life, so I was scared. But then I took advantage of चैट जीपीटी, एआई एमएल के जमाने में है, हाँ वहां एकदम। से खूब सारे मॉक इंटरव्यूज लगाए, रात को, सुबह ब्रांच जाती थी, जाने से पहले मॉक इंटरव्यूज, रात को आके मॉक इंटरव्यूज, वो हर तरीके के क्वेश्चन पूछे। बस मेरे को ये था, क्योंकि हमारा सर, एवरीबडी हैज टोल्ड, देयर इज अ परसेप्शन दैट इंटरव्यू जितना पहले हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जो पैनल है वो आपको पेशेंटली आराम से सुनेगी, दे हम्म। वुड गिव टाइम टू यू। ओके। व्हेन आई वेंट देयर, I got to know that in my panel, my number was last, वाह। ninth number. What was it? I was shocked। मैं, यार ये क्या हो गया, अब तो मैं गई। नाइन्थ नंबर है, शाम को 5 बज जाएंगे, पैनल मुझे भगाएगी जल्दी से। सबको 10 मिनट 15 मिनट लग रहे थे। आई वॉज ओके, चल ठीक है, 10-15 मिनट ही लगे, मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर पाऊँ वहां पे, दैट वुड बी more than enough. I went inside. I still remember CGM sir was sitting in just in the middle of the panel, and he was ओके। looking like he was directly looking into my eyes, and I thought, okay, so for a background check, I have my hobby as public speaking, so I was very confident कि मैं confidently अच्छे से deal करूंगी। I have spoken a lot of times on stage, I have participated in competition, so that was not an issue. So I went inside, I greeted everyone, I sat down, and then they started asking question. I still remember the first question they asked me by my surname, that आपका surname बहुत ही अलग है, Oberoi, because usually you don't find people inside with such kind of surname. So he asked me a question about Vivek Oberoi and Suresh Oberoi, his father. Then questions started coming. It was from my educational background from commerce. So I have done my graduation in commerce and then I did my post graduation in economics. So I knew that बहुत अच्छी बमबारी होने वाली है questions की, because both are trending topics and banking are And directly related to related to it. banking, obviously, right? Exactly. So you must be very well versed with monetary policy, RBI, SEBI, NABARD, everything. So I was okay with it. I was answering. I fumbled in between. That's normal because जब आप इतने हाईली प्रेशर एनवायरनमेंट के अंदर बैठे होते हो तो हम्म। डर लगता ही है, मुझे ओके। भी लगा। इंटरव्यू चलता रहा, आई वाज फीलिंग थर्स्टी एंड आई वाज सो स्कैर्ड। ही वाज आस्किंग एंड आई स्टिल रिमेंबर विद सीजीएम सर, so my entire duration of the interview was 24 minutes at 4:35 in the evening, and he alone took 15 to 16 minutes. अच्छा। अच्छा। He was only asking question, and at the end he said, मैंने ज्यादा समय ले लिया, and then he handed over to others, and then he asked question, and when I came out I thought, यार 24 मिनट चल लिया, अब पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत कुछ गलत बोल रही थी, so they were trying to pull my leg, or were they happy or not. Then I came back and I started with my job again, and I was hoping कि यार अब कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, देखते हैं क्या इतना होता है, दूर बिकॉज आके, वैकेंसीज, हाँ। because it was last time when I gave it in the mains, I was dead sure that I would clear it. My paper went very good because for the first time I was very happy कि मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया। जीके मुझे आती थी, बिकॉज जीके पे मेरी कमांड हमेशा से अच्छी थी। मुझे, आई लाइक रीडिंग, आई यूज टू रीड अ लॉट फ्रॉम डिफरेंट मैगजीन्स, फ्रॉम वीडियोज। उस समय नहीं हुआ तो दिस टाइम आई वाज लिटिल लेस होपफुल, बिकॉज मैं, मेरी सिचुएशन वाज नॉट दैट गुड एंड नॉट दैट कंफर्टेबल व्हेन आई गेव द मेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद ये था कि यार अब तो बस ये हो जाए इंटरव्यू, सो दैट इट फील्स डिफरेंट कि आप एकदम से जूनियर एसोसिएट से 3 मंथ्स के अंदर यू आर टेकिंग द फास्ट ट्रैक प्रमोशन। कि आप, क्योंकि इफ यू गो बाय दिस चैनल इट वुड टेक एटलीस्ट 4 to 5 years इफ यू एटलीस्ट। क्लियर JIB and करेक्ट। CIB, then you could speed up the process, but then also there is no guarantee दैट टू द अर्लीस्ट becoming। 4 to 5 years सबसे जल्दी अगर yes, हो तो। exactly, मतलब, बिल्कुल। और JIB CIB इज लाइक, एक पेपर रह गया तो रह गया, रह गया। वो निकलता ही नहीं है, बिकॉज देन यू डोंट गेट टाइम। तो ये होता है कि one thing which is everybody should learn is, when you get a job, they are like next 6 to 8 months कि आप quickly change कर सकते हो, because that time your mind is totally fresh if you want। आप पढ़ाई से अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुए हो, आप कर सकते हो। तो आई वॉज
श्योर कि यार अभी करना है जो करना है, अभी टाइम है, एंड आई वॉज डिटरमाइंड फॉर दैट. Then the day came of the result. In the lunchtime, I was talking to my friend. I said, "यार आज आएगा result. लगता है आज आएगा. Gut feeling है." And that time I was doing KYC, and all of a sudden the notification came that SBI PO final result has been out. I straight away left all the work. I straight away went to washroom to check it, and I remember my roll number, and I just typed it. And in the middle row, I found it and I was, मैं बन गई officer. This was the first line which came. And I would remember that day for the rest of my life because it वाह. was such a beautiful moment for me. And in the call, I was saying, यार मैं बन गई officer. And everybody was so happy. Then I told my family, they were so delighted. And that day, I understood one thing. बड़ी एक अच्छी कहावत है कि कहते हैं कि दुख की रात में सोता कौन है और खुशी की रात में नींद किसको आती है. That entire night I was not able to sleep. And similarly, same thing happened when I failed also. वो सब कुछ cover हो गया in that one small roll number which came in that PDF. And then I remembered that how I used to give mocks. ट्रेन में बैठे बैठे मॉक्स लगा रही हूँ, बस में चलते चलते मॉक्स लगा रही हूँ, बैंक में लंच टाइम है उस समय मॉक्स लगा रही हूँ, जीके के मॉक ड्रिल्स दे रही हूँ, स्मार्ट कीड़ा पे फ्री क्विजेस दे रही हूँ कि यार कुछ कहीं पे एक क्वेश्चन ऐसा हो जो मेरे पेपर के अंदर आ जाए, बिकॉज 1 मार्क मैटर्स अ लॉट. आप कट ऑफ से बाहर हो जाते हो, आप रेस से बाहर हो जाते हो एक नंबर पे. एंड दैट एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड बाय जस्ट दैट वन रोल नंबर. एंड दैट फीलिंग इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. मैं नहीं कर सकती I डिस्क्राइब. can सो understand. ब्यूटीफुल. Your emotion says that all. Your face says that all. Everyone would एग्जैक्टली. understand that from your, you know. तो आपके आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि को क्या है वो. नहीं बहुत. I was just like it was amazing listening to your journey. अच्छा एक दो तीन चीजें मेरे मतलब I thought I would ask you when we were saying I did not interrupt you because you were in such a great flow. ये पिछले बार जब मेंस पे रह गया, डू यू रिमेम्बर कितने से कहाँ पे रह गया था? कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कट ऑफ रह गया था या ओवरऑल मतलब व्हाट डू यू थिंक? 87.5 was the cutoff last time. And I scored 85 point something. तो वो overall रहा था. Sectional was clear, descriptive, everything was clear. Overall cutoff रहा था. अच्छा, और And कहीं पे I was really डिसअपॉइंटेड shocked. था? आप कहीं पे भी डिसअपॉइंटेड थे कि इस वाले सेक्शन में यू यू एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम योरसेल्फ बट इट एंडेड अप नॉट सो गुड? Uh, so basically, SBI doesn't release the sectional marks. So I put an RTI to know that what has happened. Then it came. I was disappointed in descriptive. I was expecting more marks. It came less. तो फिर उस दिन वो ऐसा होता है ना सर, ईगो पे बात आ जाती है. दैट डे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि यार नहीं, क्या गलती हुई है. अटेम्प्ट उस टाइम में पूरा हुआ था, क्वालिटी में इशू था, क्वालिटी इंप्रूव करनी है. क्यों आंसर्स में गड़बड़ हो रही है, मैं क्रिस्प नहीं लिख रही हूँ, मैं एक्यूरेट उसमें नहीं आ रहा, बिकॉज So that is एआई that is चेक करता what है. that is where it stuck you कि इस बार descriptive का एग्जैक्टली exactly, अलग लेवल पे because बिल्कुल. I did not know that you put in an RTI. I thought that तुमने कुछ सोचा होगा उसकी वजह से, but now it is clear नहीं, कि बिकॉज आई वांटेड आपने टू नो. डेटा या एग्जैक्टली. डेटा बेस्ड. वेरी गुड. तो उसी की वजह से आपको क्लैरिटी था कि डिस्क्रिप्टिव तो अच्छे से करना ही है. एंड एग्जैक्टली. एक्चुअली एसबीआई पीओ में आईबीपीएस पीओ में फिर भी आई मीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आईबीपीएस पीओ ऑल्सो, बट एसबीआई पीओ में तो वो 50 नंबर जो है वो एक पूरा सेक्शन बन जाता है एक्चुअली. बिल्कुल. राइट. एंड यू कैन स्कोर अ 40 प्लस इन दैट इफ यू आर ओके एग्जैक्टली. विद इट. राइट. तो ओके दैट्स व्हाई व्हाट आई वांटेड टू आंसर. अच्छा और एक चीज हुआ होगा क्या कि ठीक है you are close to the cutoff, but I'm very sure कि the kind of preparation that you did last time you were expecting much beyond the cutoff. मतलब शायद अगर कट ऑफ एग्जैक्टली. 88 है आपको लग रहा था कि यार ये तो मैं 95 लेके आ जाऊंगा. राइट. मतलब ये बिल्कुल. एक था. तो नाउ लुकिंग बैक डू यू थिंक कि टू एक्सपेक्टिंग टू मच ऑल्सो रिड्यूसेस आवर परफॉर्मेंस? इस बार आपको ये सब वरी करने का टाइम ही नहीं मिला. एक्चुअली टाइम नहीं मिला ना इस बार, तो मतलब काम करो, ना ये टाइम करो. मिला. एग्जैक्टली exactly. ना बात करी. एंड आई अंडरस्टूड वन थिंग.
कर्म करो फल की चिंता मत करो, लोग यूं ही नहीं बोलते, बात वहीं पे सच होती है। जितना एक्सपेक्टेशन थी उतना हर्ट हम्म। हुआ, हम्म। उतना मैं डेवास्टेटेड फील कर रही थी। इस बार तो था कि एग्जाम दे के आए। एक्चुअल में ना सर, एवरी एस्पिरेंट का अगर ये माइंडसेट हो जाए, एग्जाम दिया, खत्म, डोंट थिंक अबाउट दैट। When the result will come, you will understand that if you are going good, results will show. If you're doing something wrong, that will result also show you. एग्जैक्टली। तब आपको वर्क करना चाहिए। बीच में जो कंटेम्पलेशन करते हैं ना हम लोग, वो हमारी परफॉर्मेंस में वेस्ट हमको ऑफ टाइम। बहुत पीछे ले जाता एंड है। एंड एंड इट टोटल अफेक्ट्स वेस्ट ऑफ अदर टाइम। अदर अदर एग्जाम्स आल्सो। आई मीन, मैं तो ये बिलीव करता बिकॉज हूँ कि एग्जैक्टली trying to predict your cutoff, your score, all of those are useless tasks according to me। और मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली बोलता ही रहता हूँ ये, कि why to do it? I mean, even if you have predicted the cutoff एकदम perfectly, what would you give you? Would it give you a यू कैन selection? चेंज No, you नथिंग। cannot change nothing. So obviously, नो right? एग्जैक्टली। Right, right. अच्छा, जीए, जीए के लिए आपने जैसे बोला कि, तो जीए के लिए कैसे आप, आपका जीए वैसे आपकी रीडिंग से तो अच्छी थी, तो ये प्रैक्टिस करते थे, कैसे करते थे, क्या करते थे इसमें, अभी जो टाइम मिलता था उसमें बहुत ही कम टाइम मिलता था आपको जो भी। एडमेंट नेचर बोलूं या क्या बोलूं, मेरी एक बहुत पुरानी हैबिट थी, आई यूज टू मेक नोट्स। मैं आज तक ऐसा हाँ। है कि मेरे को जीए के नोट्स बनाने, बिकॉज देन आई आई रिमेम्बर द पेज, कि मैंने किस पेज पे किस कॉर्नर पे क्या लिखा है। एंड व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन, मैं डायरेक्टली उस पेज पे पहुंचती थी, यार वहां पे ये लिखा था। तो नोट्स बनाती थी, बल्क पीडीएफ्स होती थी, नोट्स यूट्यूब से पढ़ा, मॉक ड्रिल्स होती थी, बहुत स्मार्ट सारी कीड़ा के चीजें थी। मॉक एंड ड्रिल्स देन होते आई यूज थे। टू, एग्जैक्टली, मॉक ड्रिल्स होते थे एंड देन क्विजेस। हम्म। मॉक ड्रिल दी, क्विज दो। क्विज देंगे हम्म। तो सर एक्चुअल में क्या होता है, यू माइट फॉरगेट द नोट, बट यू विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन रॉन्ग इन द क्विज, व्हाट यू हैव डन wrong in the examination. Attempting it and then analyzing it, that is very important. Just attempting the mock and then leaving it will not help you. Analyzing it वेरी गुड, वेरी gives you the clear cut picture that what you करेक्ट। have done wrong. And then the extra information given in the solution, that is what that makes the difference. दैट इज आप व्हाट क्या मेक्स उसको यू skip बेटर कर फॉर देते द हो? Okay, नेक्स्ट वन। That betters exactly, your choice of questions also when you pick up the question to choose. I'm sorry, choose the question to exactly, do, and then you also have a more insight into that question when you go ahead with it. exactly. Good, 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 very good. And that's a Because न्यूज तो वही है ना, hmm. And this अंदर I उसके think, अंदर डिटेल्स ही तो चेंज हो रही हैं। हाँ हाँ। एंड आई थिंक और एक चीज है, क्योंकि एनालिसिस की आपने बात कही, तो आई थिंक कि ये जितना जीए में तो इम्पोर्टेंट है, उससे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में। बिकॉज दैट शोज यू हाउ टू चूज बिल्कुल, क्वेश्चंस, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चंस। exactly. So in quant, last time I remember in the 2024 examination, there was some DI. I got stuck in it and I wasted a lot of time in it. So ओके। that costed me some marks. But in 2025, I was determined, yeah, pehle na, what I used to do whenever the paper used to come in prelims or in mains, I would, it was my way of handling the examination. I used to give 30 seconds to just see the entire question. And then I used to make notes कि यार ये क्वेश्चन ये वाला है, ये क्वेश्चन ये वाला है, सो दैट आई कुड प्रायोरिटाइज कि मुझे पहले कौन से करने हैं, कि मेरी कमांड किसके अंदर है। इफ आई एम स्ट्रॉन्ग एट ब्लड रिलेशन, आई वुड गो फॉर दैट फर्स्ट, आई वुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन समथिंग एल्स। इन रीजनिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल, inequality is there or syllogism is there, so you समझ should गया, go for मतलब that first. you wanted to play to your strength, which is perfectly all right to do, but And I हाँ। used to do that only. हम्म। And when it came the analyzing, so basically, I sometimes what happens, we are following the same method again and again, which is हम्म। quite lengthy, and there are a lot हम्म। of shortcuts available to करेक्ट, solve the question, करेक्ट। and you need shortcuts. So हम्म। analyzing quant reasoning becomes more essential because then you know that how you could solve these. What are the How you shortcuts can for reduce puzzles? time For on those questions. exactly, Hmm. exactly. And for English, actually, sir, I never counted English of just 20 marks in mains. I always took it as 70 marks, 20 plus descriptive and 50. And that objective should be the case. That should be combinedly. the case. That's exactly the case. And similarly in IBPS also, that it should be 25 and 40, 40, 65. 65 marks, right? You should not take it individually because it is the entire game changer. 50% you are playing, 25% you are playing. You can make a hell lot of Exactly, difference in exactly. that. And 30, And you don't have 30%, more than 30% is that section. If you combine exactly, English and descriptive, more than 30% is that, right? exactly.
You were saying something, and you uh, So then in I, English and descriptive. yes, sir. So my always, you don't have to be master at everything. Hmm. You cannot always score marks 100% accuracy in math, 100% in reasoning. आप फंबल करते हो, गलतियां होती हैं, इजी क्वेश्चंस आप गलत कर देते हो कई बार, Hmm. और कई बार ऐसा होता है कि बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में बन जाते हैं, मे बी दैट प्रेशर वर्क्स, घर आके वो आपसे नहीं होते. तो यू शुड नाउ वर्क एट योर स्ट्रेंथ. प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट हाउ यू टैकल in the limited time frame, and mains is all The about how pressure you of make the speed. decision of Prelims is all selecting. about how to Exactly. handle the pressure of speed. And And means. after a point of time in banking examination, आपका एक prelims निकलने जब start होते हैं ना, तो आपके back to back निकलते हैं. Hmm. Then the entire onus lies on your mains examination. Right. Now how you are tackling it, everybody को ये होता है कि यार हर चीज के अंदर लेके आने. No, you don't have to do that, and one benefit is that the sectional is very less. So now your game is that you have to score as maximum in which section you want. That is your choice. Reasoning अच्छी है, reasoning में लेके आओ. Right. Math अच्छी है, math में लेके आओ. GK के अंदर, because there is such a wide arena of GK, and the changing pattern of banking examinations in GA, they are asking anything from anywhere. आप कितना ही पढ़ लोगे? There is a There's a foundation on limit to that. it. Right. Right. So exactly. Then the cutoff is decided by GA, because math बट reasoning तो और सभी ऐसा भी अच्छे तो कर नहीं रहे कि हैं. जीए में कट ऑफ आपका 70% 80% आता है. इट इज मच डूएबल Exactly. इफ यू आर सिंसियर Exactly. इनफ टू कवर द होल थिंग इन एन Exactly. ऑर्गेनाइज्ड वे. One thing everybody should remember is you don't have to read everything. You have to read few things again and again. You have to practice few things again and again. आपको आपके strengths actual में, the one interview question is common, that what are your SWOT analysis जिसे हम कहते हैं, that what are your strengths and weakness. Every day if you're working on your weaknesses and you're strengthening your strengths, nobody can beat you. And that's what I try to do every time whenever I used to go. And self confidence, जब मैं अंदर जाती थी हॉल के अंदर, आई यूज टू से अरे हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से देना. अपने आप को एंड पेप दैट टॉक रियली, देना. बिल्कुल, बैक ऑफ द माइंड सर वो हेल्प करता है. आप एकदम. इतना ज्यादा पंप अप हो जाते हो कि आपको लगता है ठीक है, नो नथिंग कैन स्टॉप यू, एंड देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप यू. यू आर द ओनली वन हु कैन लिमिट योर सेल्फ. तो अगर आप वो लिमिट्स खोल दोगे, देन यू आर अ बर्ड टू फ्लाई. वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा, इंटरव्यू में आपका एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली रहा ही होगा कि इसके आपका जो जॉब एक्सपीरियंस, अभी आप एज अ जूनियर एसोसिएट एसबीआई में काम कर रहे थे, राइट? यस सर. तो वहां से यहाँ पे क्यों, ये वाला क्वेश्चन रहा था क्या? कैसे हैंडल किया अगर ये बिल्कुल रहा? आता. So basically, they were asking that you're already in SBI. So why should we select you? Because ultimately, you will get the opportunity to reach at heights. But then my answer to that was, as I told, that I have a hobby of public speaking and I like to deal with people. I am a social character. So I wanted that I could talk to people, I could help them, and I really wanted to serve in the best possible way. And I believe that this would be the best opportunity because, first of all, you're working in such a highly prestigious organization, helping people for the most valuable bank in the country. I believe that my answer was straight away that, sir, owing to my strengths, owing to my hobbies, and owing to my experience, I think that I would be highly uh, comfortable in dealing with the customers because I have already had the real life experience of the bank. What are the problems I know? Why people are facing such issues I know. And हम्म. now I know that how I can tackle them. लोगों को समझ आता है, लोग basically everybody is there to help you. But the only gap which comes in between is कि आप जो कस्टमर को समझाना चाह रहे हो और कस्टमर जो आपसे पूछ रहा है वो एक पॉइंट पे नहीं आ पाते हैं. लैंग्वेज बैरियर होता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, प्रेशराइज सिनेरियोज होते हैं. सो बायसनेस आई भी न्यू होते दैट हैं हाउ कभी आई कभी. कुड. राइट. और सर इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, शाउ इतने ज्यादा क्योटिक एनवायरनमेंट हो जाता है, आप चाहते हुए भी हेल्प नहीं कर पाते हो. बट देन आई टोल्ड देम दैट having the real life experience, I have talked to customers and I felt that I could help them, and maybe they found that thing in my way of talking to them also, then only they Actually, you uh, leveraged your selected me. strengths and hobbies and your current situation, mixed that up, and showed that how you could be better Exactly. oriented towards of a probationary officer role rather than what you're doing currently would be more useful to the Exactly. organization. Take it. Great. Exactly. That's a And good. also to add,
uh, they gave me 47 marks out of 50 in the interview. So that was a real game changer for me, because if you are scoring an interview more than 85%, your selection is sure shot. They want Scoring an to interview, take you, and that's why they are giving you that score. and and I'm really blessed that that interview went for 24 minutes, and then they gave me that marks, and that helped me. तो देखो, सारे ही जो मिथ्स होते हैं वो मिथ्स ही होते हैं। पहले इंटरव्यू का भी कोई फायदा नहीं होता है, आखिरी इंटरव्यू का भी कोई फायदा नहीं होता है। सब इंटरव्यू के अंदर क्या चल रहा है उसी का फायदा होता है एट द एंड ऑफ द Exactly, डे। exactly. चलो, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज वेरी वेरी इंसाइटफुल। आई एम श्योर स्टूडेंट्स वुड लव दिस, राइट? सो यू नाउ व्हाट, जॉइनिंग वाइनिंग का कैसे क्या करोगे अभी? कितना, अभी तो बहुत सारा काम होगा इधर। इसको यहाँ पे you'll have to get अभी सर packing. यही है, आई एम वेटिंग फॉर द मेल। यहाँ पे नोटिस पीरियड स्टार्ट हो गया है। As हम्म, soon as it finishes, I would go home. I want that at least 2-3 days I get to stay with my family, because सही है। then उसके बाद में दूर चले जाएंगे, पता नहीं कब वापस टाइम मिले, ये वाली फील नहीं आएगी दोबारा। हाँ, So I'm नहीं। hoping everything, अभी यहाँ तक God has helped me, so He will help me again also in चलो, नहीं, कोई बात नहीं। इस future टाइम endeavors. a lot of celebrations are also pending with your family, है ना? फैमिली भी वेट कर Yeah, रही yes, होगी। sir. चलो, बहुत अच्छा। It was so nice talking to you. Like you said that uh, you should always consider yourself a bird to fly, and Yes, sir. I'm sure this is just the start. ये आपके करियर का स्टार्ट ही है, और एक्चुअली में स्टार्ट है। तो इससे भी बहुत बड़े बड़े कारनामे आप करोगे, और उस टाइम पे फिर से इंटरव्यू करेंगे कारनामों के बाद। बिल्कुल sir. I would be blessed if I get another opportunity to have such a beautiful session with you. It was my pleasure all along, Guneet. All the best for your future. Bye bye. Thank you, sir. Thank you so much.